Next, 10th very important salient features of Indian Constitution is fundamental duties. Well, Part 4A of the Indian Constitution specifies the 11 fundamental duties which every citizen of this country must perform as and when he would be called upon, and apart from these on a regular basis as well. ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटीज़ है हमारे, और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में कवर होते हैं, और यहाँ पर 11 डिफरेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिस्टेड किया है, और ये सारे हिंदुस्तानियों ने, सारे भारतीयों को ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमेशा परफॉर्म करनी चाहिए अपने देश के लिए। यहाँ पर मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ही जिक्र करूँगा। अगर आपको सारे फंडामेंटल्स ड्यूटीज़ के बारे में और डिटेल में जानना है तो अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। वहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक लिंक अपलोड किया है, और उस लिंक में आपको स्पेसिफिकली सारी फंडामेंटल जो हमारे ड्यूटीज़ हैं वो सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ मैंने एक सेपरेट ट्यूटोरियल में कवर किया है। तो प्लीज़ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड चेक आउट another tutorial specifically on the fundamental duties, in which you'll find that the fundamental duties I have covered more in detail. Here I am just going to give a small reference perspective to understand what are our major and most important fundamental duties. So let's talk about example. To respect the Constitution. This is one of the foremost important fundamental duty of every individual across this massive land and across this country called India. सबको हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब है, हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्यूटी है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ है। कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर नहीं है। सारी जो चीज़ें हमारे आसपास जो हो रही है या फिर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो हो रहा है वो सारी इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत होती है। कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, हमारा संविधान सबसे ऊपर है और बहुत ताकतवर है, और इसीलिए हमें हमेशा उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसकी तरफ बहुत सम्मान के साथ उसको देखना चाहिए। सो दिस इज़ द फर्स्ट इन फैक्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी। नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टेंट अपार्ट फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इज national flag and national anthem. We must respect our national anthem, we must respect our national flag, and that is our another set of fundamental duties. We must remember that national anthem and national flag is our identity. We may belong to any religion, we may belong to any ethnicity, class, or for that matter even a caste or even region. We all belong to one nation, and we have a one national flag and we have a one national anthem, and respecting it is our fundamental duty. कॉन्स्टिट्यूशन के बाद जिसका जिक्र होता है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में वो है हमारा राष्ट्रीय ध्वज और हमारा राष्ट्रीय गान या फिर नेशनल एंथम। ये दोनों चीज़ों को हमें हमेशा रिस्पेक्ट देना चाहिए और उनके लिए खड़ा होना चाहिए, एंड दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी। आप किसी भी धर्म के हो या फिर पंथ के हो या किसी भी जात या पात के हो, कौन सी भी लैंग्वेज आप बोलते हो या फिर आप कौन से भी कोने में इस देश के कोने में रहते हो, आप सदैव हमेशा तन मन धन से इंडियन है
भारतवासी है, एक हिंदुस्तानी है, और हमारी जो आन शान और जो बान है वो हमारा नेशनल फ्लैग है, हमारा नेशनल एंथम है। और इसीलिए हमेशा नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करो और नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करो। दैट इज़ योर फंडामेंटल ड्यूटी। Similarly, we have another set of most important fundamental duty, that is to protect the sovereignty of this country, its unity and integrity of this country. This is another set of most important fundamental duties that all of us must be ready to protect the sovereignty of this country. We must remember that we have not got this country free of cost. Thousands and lakhs of people have given their life. Thousands of soldiers have given their life to protect the sovereignty of this country. They have become martyrs so that we can live very peacefully and happily. Similarly, hundreds and thousands of people have worked day and night to maintain the unity of this country. We must remember that this country has a diverse population, it has a diverse culture, and that is our strength, and therefore we must stay together and integrated. And one more very important point which I want to talk about here is that we must respect each and every group around us, each and every ethnic community or even religion for that matter, because this is the only country in the world where you will find where we have thousands of dialects, hundreds of ethnicities, and so many religious groups which we are living together. If today this country has become very strong, it is only because of the foundation which our forefathers have put up together, so that the future generation can live together with all their fundamental rights as well as duties. And therefore this is another very important aspect of our fundamental duties, that we must protect our sovereignty. We must work together to maintain this brotherhood and the unity of the country, and work to integrate all together for the welfare of this country. तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटी यहाँ पर यह है कि हमें हमेशा हमारी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारी यूनिटी को हमेशा कायम रखना चाहिए, और हमारा जो इंटीग्रिटी है, क्योंकि ये जो देश है ये बहुत डाइवर्स देश है। आपको मिल मिल पर आपको हर एक 10 किलोमीटर के बाद, या फिर मान लो एक 50 किलोमीटर के बाद एक दूसरी दुनिया मिलेगी, एक दूसरी सोसाइटी मिलेगी। लैंग्वेजेस, हमारे देश में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती है, जो पंथ है, जो कास्ट है या फिर रिलीजन है, जो डाइवर्सिटी है, वो आपको और कहीं पर भी नहीं मिलेगी जो हमारे देश में है। और इसीलिए हमारा जो डाइवर्सिटी है वो हमारा पावरफुल वेपन है। वी मे हैव अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, हमारे विचार अलग हो सकते हैं, हमारे भाषा भी अलग हो सकते हैं, हमारा सोचने का तरीका भी अलग हो सकता है, लेकिन वी ऑल बिलोंग्स टू द वन लैंड and one country with all our diversity, and therefore we must protect this diversity, we must protect our unity, protect our sovereignty, and the integrity of this country is most important fundamental duty. Next very important is to promote the spirit of common brotherhood, which is the most important binding force of this country. As I've just said, we have so much of diverse culture. We have different languages, different religious groups, different ethnic groups. But one thing which joins us together, which binds us together, is the common spirit of brotherhood. And this is what the silver lining of our fundamental duty, that we must promote it and we must protect it. हमें हमेशा ये बात याद रखनी पड़ेगी कि ये जो हमारा देश है ये बहुत डाइवर्स देश है। आपको, जैसे मैंने बोला, हर एक स्टेट में आपको डिफरेंट भाषा मिलेगी, उनका रहने का, खाने का, पीने का डिफरेंट त्यौहार मिलेंगे।
हम सब डाइवर्स है, हमारी सबकी एक एक आइडेंटिटी है, लेकिन सबको जो एक साथ जोड़ता है, सबको जो एक भारतवासी या फिर एक हिंदुस्तानी या फिर एक इंडियन जो बनाता है, वो है हमारा कॉमन स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। और इसीलिए हमेशा हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारी वो फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम इस पॉइंट को, इस अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें। वी मस्ट प्रमोट कॉमन ब्रदरहुड बिटवीन ourselves and among our own communities, as well as between every community which is living in this country. And we should stay away from making any wrong comment about any community, or for that matter about any individual. We must stay together, share our ideas, share our thoughts, and for that matter share the common values what we have. And therefore this is the most important fundamental. And the last very important fundamental duty which I want to talk about here is that we must preserve the rich heritage of our composite culture. So when we talk about a culture, we have something called Indian culture. ये जो कल्चर है ये एक भारतीय कल्चर है, और इस भारतीय कल्चर में आपको सारे अनगिनत कल्चर मिल जाएंगे। जैसे मैंने अभी बोला, इफ़ यू जस्ट ट्रेवल नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट ऑफ दिस कंट्री, यू विल फाइंड डिफरेंट स्टाइल ऑफ अ कल्चर related to different aspects of their life, related to different aspects of their celebration. And this is the beauty of this country. And therefore we youths, and especially all the people who are there, who are listening to me through my tutorial, please preserve your culture. Our culture is a very, very old culture, and therefore it is a rich heritage culture. We must preserve it for posterity. We must preserve it for our future generation. We must protect it so that we stand together with all our differences. अंत में यही कहूँगा कि जो हमारा कंपोजिट कल्चर है उसको हमेशा हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, उसको प्रिजर्व करना चाहिए। हमारा जो कल्चर है, हमारा जो हेरिटेज साइट्स है, उसको हमेशा प्रोटेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि यही जो हेरिटेज साइट है वो हमें अपना इतिहास बताती है। अगर हम उस हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि फ्यूचर में जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हम लोगों ने हमारा कल्चर प्रोटेक्ट करने के लिए क्यों कुछ नहीं किया। और इसीलिए हर एक हिंदुस्तानी की, हर एक इंडियन की और हर एक भारतीय की यही फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो हमेशा अपना जो हेरिटेज है, तुम्हारी जो आइडेंटिटी है और मेरी जो आइडेंटिटी है और हमारी जो आइडेंटिटी है, उसको हम प्रोटेक्ट करेंगे। हमारा जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, एंड अपनी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है उसको हम परफॉर्म करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट 10th very important features of Indian Constitution, and that was fundamental duties.